Assalamualaikum dear students. I am your mathematics teacher Rida Imtiaz and I welcome you all to your new class. Today we are going to start unit number 1, Matrices and Determinants, which is the most interesting and easiest chapter in your book. So in this video we will study about matrix, order of matrix, equal matrices, and we will also do exercise 1.1. Okay, now what is a matrix? If we enclose the real numbers, say 0, 1, 2, 4, 5, 6, if we enclose these real numbers in brackets, then it forms a matrix. Clear? अगर आप रियल नंबर्स को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनता है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स का नेम है, लेट्स सपोज वो बी है, सो बी मस्ट बी कैपिटल. ओके, हेयर the name of the matrix can be any capital alphabet. Okay, any capital letter. So 0, 1, 2, 4, 5, 6, these are the real numbers. So you can define it as a rectangular array or formation of collection of real numbers enclosed in brackets is said to form a matrix. Clear? Now 0, 1, 2, 4, 5, 6, these are the elements of matrix. Elements of matrix, or you can say entries of a matrix. What are here the elements and entries? 0, 1, 2, 4, 5, 6, these all are the elements or entries of a matrix. Is it clear now? Okay, so now look here, 0, 4 is in column, 1, 5 is written in vertical form, 2, 6 is also written in a vertical form. So all the vertical arrangement forms, or they are called column. So how many columns are there? 0 and 4, it is written in vertical form, so it is known as column. This is column 1. Clear? This whole, it is column 1, column 2, column 3. So how many columns are there? 3 columns are there. Now look, these are all the vertical arrangement of the elements. Now if we take the elements from left to right in horizontal form, so 0, 1, 2 is arranged in horizontal form, so 0, 1 and 2 forms row 1. Clear? 4, 5 and 6 is also in horizontal form, it form row 2. Is it clear? So look, there are 2 rows and how many columns? 3 columns are there. Clear? So now here we come with a new concept, that is order of matrix. What is order of matrix? Order of matrix mean row of matrix into column of a matrix. Okay, now how many rows are there in this matrix? There are 2 rows. Clear? How many columns are there? 3 columns. So this is order of a matrix and we read it as 2 by 3 और 2 into 3. इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 by
3. इज इट क्लियर? और हमेशा जब भी ऑर्डर की बात की जाएगी तो फर्स्ट यू हैव टू राइट रोज एंड देन कॉलम. अगर आपने कॉलम्स पहले लिख दिए, रो बाद में लिख दी तो ये ऑर्डर नहीं होगा. ऑर्डर के लिए रोज शुड बी फर्स्ट एंड देन वी हैव कॉलम्स. सो this is the matrix of 2 rows and 3 columns. So 2 by 3 is the order of this matrix B. Is it clear? Okay students, now we are going to solve exercise 1.1 question number 1, and this question number 1 is related to the order of matrix. What is order of matrix? Row into column. So in question number 1 of your exercise 1.1 we are going to find the order of these following matrix. Okay, so first of all we have A matrix, 2 3 5 minus 5 6. Now what is the order of matrix? You have to write order of A is equal to row into columns. You know that order is row into column. So how many rows are there? First of all, in order you have to write rows and then columns. How many rows are there? Look, this is row 1, row 2. These are rows. So how many rows are there? 2 rows. Okay. How many columns are there? Look, 1, 2. How many columns? 2 columns. So 2 rows and 2 columns. So order of A is rows into column. So 2 rows, 2 column. This is the order of A. Okay. Now B matrix, 2 0 3 5. Again there are 2 rows and how many columns? 2 rows and 2 columns are there. How? 2 rows, 2 columns. So order of B is also 2 cross 2. C matrix. How many rows are there? Only 1 row. 1 row and how many columns? 2 columns. So 1 cross 2 or 1 by 2 is the order of C. Now F. Look, there is only one element or entry in this matrix. 2 is the element or entry of the matrix F. Now what is the order of this matrix F? There is only 1 row and only 1 column. So 1 row, 1 column, order of F is 1 by 1. Clear? So that was question number 1, and in which I solved some parts. Rest of the question is your homework and you have to try all these parts. Now we are going to study about equal matrices. Okay, equal matrices. 2 matrices A and B are said to be equal if they follow the 2 conditions. 2 matrices कब equal होंगे? अगर 2 conditions fulfill हो रही होंगी. The first condition is कि 2 matrices A और B दोनों का ऑर्डर सेम होना मस्ट है एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है उसको हम अभी एग्जांपल से देख लेते हैं. सो 2 मैट्रिसेस के लिए कि वो इक्वल हैं या नहीं, 2 कंडीशंस हैं. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. Here we have 2 matrices A and B. Now there are 2 conditions for equal matrices. पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर चेक करें. यहाँ पर आपके पास व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ A. A का ऑर्डर क्या है? A में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़. एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स. सो 2 रोज़ 2 कॉलम. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. मैट्रिक्स के बॉटम पे ब्रैकेट के बाहर आप इसका ऑर्डर किस तरह से लिखेंगे? 2 बाय 2. 2 रोज़ 2 कॉलम. Now how many rows and columns are there? 2 rows, 2 columns. So what is the order of B? 2 by 2. Now first condition is fulfilled, that the order of A and B is same. Now we have to check
the second condition. What is the second condition for the two matrices to be equal? Their corresponding entries are equal. Corresponding entries का क्या मतलब है कि अगर आप A का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो B का भी फर्स्ट एलिमेंट देखें, क्या ये दोनों इक्वल हैं? A का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और B का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस 0. 1 माइनस 0 इज़ 1. इट्स मीन इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और B का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है. नाउ सेकेंड एलिमेंट इज़ 3. यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट 3 है. लुक हियर, यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है. ओके, नाउ एट दिस प्लेस 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 इज़ ऑल्सो 2. सो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 हुआ. देन at the end we have 4 and 4. So look, all the elements are equal. Corresponding means कि अगर आप इस मैट्रिक्स की ये वाली पोजीशन ले रहे हैं तो B की भी आप यही पोजीशन लेंगे. अगर आप A की ये पोजीशन ले रहे हैं, ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो B का भी यही एलिमेंट लेना पड़ेगा. these are known as corresponding elements और corresponding entries. So यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 बातें थी, 2 कंडीशंस थी. ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड आल्सो बी इक्वल. सो दोनों चीज़ें यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं. सो वी कैन राइट A इज़ इक्वल टू B. इज़ इट क्लियर? A इज़ इक्वल टू B. सो दीज आर इक्वल मैट्रिसेस. क्लियर? अगर आपके पास ऑर्डर एक जैसा होता है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होती तो हम इनको इक्वल नहीं कहेंगे. इक्वल के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है. इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इक्वल मैट्रिसेस. ओके, सो हियर वी हैव ए मैट्रिक्स. यहाँ पर ए मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज़ 3. क्या यहाँ पर कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट हो और वो 3 ही हो? सो यहाँ पर देखें बी मैट्रिक्स, नो. यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 एलिमेंट है. सी में देखें, सी इज़ 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 इज़ 3. सो इट्स मीन कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 3 है. सो ए और सी दोनों सिमिलर हैं, इक्वल हैं. ओके, सो हम ये कहेंगे कि ए इज़ इक्वल टू सी. क्लियर? ए और सी आपस में इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एंट्रीज भी सेम हैं. एंट्रीज एंड एलिमेंट्स भी सेम हैं. नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी, 3 and 5. क्या कोई और मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास पहला एलिमेंट 3 हो और दूसरा एलिमेंट 5 हो? दिस इज़ डी. डी इज़ 5 and 3. पहला एलिमेंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है. सो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं है. यहाँ पर 3 है तो डी में भी यहाँ पर 3 होना मस्ट है. सो बी एंड डी इक्वल नहीं है. सो बी के जैसा और कौन है यहाँ पर? कौन सा मैट्रिक्स बी के इक्वल है? लुक दिस, I matrix में we have 3 and then 3 plus 2 is 5. This is also 5. So B and I both are equal. So you have to write B is equal to I. Is it clear? Now C is done. D is 5 and 3. कोई और मैट्रिक्स है जो 5 और 3 हो? No. So D के इक्वल कोई भी नहीं है. Now E matrix 4 6 0 2. E is equal to 4 6 0 2. Here E is equal to H. E और H both are equal. Entries are same, order is also same. क्या कोई और मैट्रिक्स है जो E और H के जैसा है? Look at this J matrix. 2 plus 2 4. 4 plus 2 6. 2 minus 2 is 0. 2 plus 0 is also 2. So it's mean E, H and J. These 3 matrices are equal. E, H and J. Now next is F, 2 and 6. G is 3 minus 1, 2. 3 plus 3, 6. 2 and 6. So F and G both are equal. So write
F is equal to G. F is equal to G or G is equal to F, both are same. So all the parts are now completed. कौन कौन इक्वल थे? A is equal to C, B is equal to I, E is equal to H is equal to J, and F is equal to G. D is not equal to any matrix. Is it clear? So that was question number 2, exercise 1.1. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel